Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11 and today I am going to discuss absorption of food. So let's move to the whiteboard. So dear students, absorption of food. तो मैंने आपसे प्रीवियस लेक्चर में एक गुजारिश की थी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर दो तरह से सवाल पूछा जा सकता है. एक्सप्लेन डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज एक्सप्लेन एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन. अगर आपसे पूछा जाएगा डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन तो उससे प्रीवियस हमने ड्यूडेनम और जेजुनम के अंदर जो कुछ भी पढ़ा वो उसके अंदर शामिल होगा. और अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट एक्सप्लेन द एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन और एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड, तो फिर हम उसमें जो आज वाला टॉपिक है वो शामिल करेंगे क्योंकि एब्जॉर्प्शन जो होती है दैट टेक्स प्लेस इन द आइलियम. और इससे पहले हम ये भी पढ़ चुके हैं कि ड्यूडेनम से होते हुए जेजुनम के अंदर जो कुछ भी हमने खाया था अल्टीमेटली जेजुनम के अंदर आकर वो मुकम्मल तौर पर डाइजेस्ट हो जाता है, सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हो चुका होता है. अब ये मॉलिक्यूल्स इस काबिल हैं कि वो ब्लड स्ट्रीम में शामिल हो सकें और वो एब्जॉर्ब हो सकें. मीन्स कि जो हमने कार्बोहाइड्रेट्स खाए थे दे हैव बीन अल्टीमेटली ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज, जो कि हमें स्टार्च खाई और अल्टीमेटली इट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज. इसी तरह से जो हमने प्रोटीन्स खाई थी किसी भी शक्ल में, पल्सेस की शक्ल में, मीट की शक्ल में, वॉट एवर देयर फॉर्म, so they has been ultimately converted into amino acids, and the lipids they have been broken down into fatty acids and glycerol. Clear? अब ये सारा कुछ बन चुका है जेजुनम के अंदर, मील्स के डाइजेशन वहां पर मुकम्मल हो चुकी है. अब इन्हीं तमाम मॉलिक्यूल्स की होनी है एब्जॉर्प्शन, मीन्स कि they have to be uptaken towards the bloodstream, so that is called as the absorption. So dear students, small intestine consists of three parts. और hopefully आपको पता है, the first part is duodenum, the second part is jejunum, and the third part ileum. And dear students, nearly all the products of digestion are absorbed इन आइलियम. ये आपने याद रखना है, ठीक है. एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होगी? नियरली ऑल प्रोडक्ट्स जो हैं वो आइलियम के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे. चलिए इसको इसकी एनाटॉमी की शक्ल में इसको स्टडी करते हैं. नाउ था एनाटॉमी ऑफ आइलियम. द इंटरनल surface means mucosa of ileum consists of many folds and has velvety appearance. वेलवेटी का मतलब है नरम, सॉफ्ट एंड स्मूथ, एक ही जैसा और सॉफ्ट ऐसे उसके ऊपर स्ट्रक्चर होता है. एंड उसके फोल्ड्स और उसके ऊपर बहुत सारी आइलियम के अंदर बहुत सारे फोल्ड्स हैं, अभी डायग्राम में भी एक्सप्लेन करूंगा. और उसकी ऊपर वाली जो सरफेस होती है वो वेलवेटी इन अपीयरेंस होती है. एंड इट इज ड्यू टू, ये किस वजह से है वेलवेटी? ड्यू टू small finger-like
outgrowths called villi. उसकी वेलवेटी अपीयरेंस किसकी वजह से आ रही है? फिंगर लाइक कुछ आउटग्रोथ्स होती हैं या प्रोजेक्शंस होती हैं, उनको हम कहते हैं विल्लाई. विल्लाई इज प्लूरल, इट्स सिंगुलर इज विलस. नाउ व्हाट इज विलस? अब हम विलस को देखते हैं. So dear students, villus consists of three main parts. It has got three main parts. Number one, it has got capillaries, blood capillaries. Okay. Number two, it has got lacteal. Lacteal, it is basically a lymphatic vessel. और ये lymphatic vessel क्या होती है? थोड़ा सा इसको मैं टच दे देता हूँ just for the sake of convenience. Chapter number 14. इंशाल्लाह उसमें second last topic है, that is lymphatic system. उसमें हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे. जिस तरह से ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से एक और सिस्टम अल्लाह ताला ने रखा, दैट इज लिम्फेटिक सिस्टम. ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से लीक होकर जो प्लाज्मा या उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो टिश्यूज में जो चले जाते हैं ऑन डेली बेसिस, तो उन सब को वापस पकड़कर ब्लड में शामिल किया जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस लिम्फेटिक सिस्टम. इट इज़ वन ऑफ द मेजर फंक्शंस ऑफ दिस सिस्टम. तो उस सिस्टम जैसे ब्लड कैपिलरीज होती हैं, इसी तरह से लिम्फेटिक कैपिलरीज होती हैं. जिस तरह से ब्लड वेसल्स होती हैं, इसी तरह से लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं. ठीक है, तो इसी तरह से सो लैक्टियल, इट इज बेसिकली अ लिम्फेटिक वेसल. एंड द थर्ड component of villus is a single layer of epithelial cells. So that is the third component of villus. Dear students, if we see the electron microscope structure of epithelial cell, it shows that there are countless closely packed cylindrical processes in each epithelial cell. Which are called microvilli, or they're also called as brush border. अभी डायग्राम में भी मजीद एक्सप्लेन करता हूँ. इन सब चीजों का डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या फंक्शन है, क्या फायदा है इन सारी चीजों का? The enfoldings of villi and microvilli incredibly increase the surface area for
एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, ताकि जो कुछ खा रहे हैं वो फौरी तौर पर एब्जॉर्ब होता जाए। क्लियर? नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ द डायग्राम। Of ileum. So this is the first layer. This one is the first layer, connective tissue, which is also called as serosa. इसी तरह से completely इस तरह इसके नीचे मौजूद है, there is a layer of, so अगर हमने बात की थी कि जो बेसिक 3 लेयर्स हैं हमारे इस डाइजेस्टिव एलिमेंट्री कैनाल की, जो आउटर लेयर है दैट इज कनेक्टिव टिश्यू सिरोसा, और मिडल लेयर दैट इज ऑफ स्मूथ मसल्स। और स्मूथ मसल्स में भी 2 तरह के मसल्स थे, लॉन्गिट्यूडिनल जो कि आउटर सरफेस पे मौजूद हैं, बाहर वाले सरफेस पे, एंड द इनर, शाबाश आपको याद आ गया होगा, जो इनर लेयर किसकी है, ऑफ सर्कुलर मसल्स। सो दिस आर द सर्कुलर मसल्स, ये उसके नीचे वाली लेयर है। ऊपर पड़े हुए हैं लॉन्गिट्यूडनल, नीचे सर्कुलर मसल्स, ये मिडल लेयर हो गई। और फिर उसके नीचे मौजूद है द इनर लेयर दैट इज म्यूकोसा। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, इसको अगर हम देखें, सो हाउ वुड इट लुक लाइक? सो दीज आर द फोल्ड्स, ये वो फोल्ड्स हैं इसके अंदर बने हुए, जिसकी हमने बात की थी कि आइलियम के अंदर देयर आर मल्टीपल फोल्ड्स। और ये उसका यहाँ से कट सेक्शन दिखाया गया, और इन फोल्ड्स के ऊपर यहाँ पर मौजूद हैं आउटग्रोथ्स, फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स, दीज आर द विल्लाई। So these are the blood vessels I'm showing, which are supplying to these parts of the alimentary canal. So this is basically ileum. The structure of ileum. और यहाँ से फिर मैं इसको along the length काट कर ये सारे दिखाए हैं folds. Now I'm going to label it. These are the blood vessels जो आपको पिंक कलर में नजर आए, these are the arteries, और ये जो ब्लू कलर में नजर आए, these are the veins. आगे जाकर इनकी मजीद ब्रांचिंग हो रही है. So this is the connective tissue layer. And this one is the muscular layer, that is the middle layer. और इसमें ये सर्कुलर मसल्स और ये हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल्स. और याद रखना स्टूडेंट्स, ये एमसीक्यूज के लिए, कि लॉन्गिट्यूडनल मसल्स दे आर आउटर, while the circular muscles they are present inside. Okay? और फिर ये तीसरा कट जो दिखाया गया, this is the inner layer, that is mucosa. और फिर ये सारे क्या हैं, all these are the folds जो कि इस आलियम के अंदर मौजूद हैं.
और फोल्ड्स में ये देखें, ये सारे फोल्ड ऐसे ये फोल्ड बने हुए हैं इस तरह से, यहाँ पर ये एक्चुअली असल में ये शो हो रहा है आपको, तो ये अंदर इस तरह से ये फोल्ड्स, और इन फोल्ड्स के ऊपर ये वाले जो आउटग्रोथ्स हैं, दीज आर दिस वन, सो दीज आउटग्रोथ आर विलाई। क्लियर? अब हम इनमें से एक का स्ट्रक्चर देखेंगे, एक इतने सा पोर्शन का। You will see after magnification, so how would it look like? So this is a single villus, और इसी तरह से इसके पीछे और भी बहुत विलाए जो हैं वो मौजूद हैं। क्लियर? Now here is a single layer of epithelial cells, and in the center there is a lacteal and this lacteal is surrounded by a number of capillaries. These are the blood capillaries. So this is the structure of a single villus. So this is epithelial layer consisting of epithelial cells, और ये ब्लू कलर में जो सेंटर में नजर आ रही है, this is lacteal which is a lymphatic vessel, और इसमें जो ब्लू और रेड कलर में जो नजर आ रहे हैं, these are the blood capillaries. क्लियर? और ये भी सारे बाकी उसके पीछे मौजूद हैं विलाई। क्लियर? और अब हम देखते हैं इनमें से एक का स्ट्रक्चर, एक एपिथेलियल सेल का। A single epithelial cell. The electron microscopic structure, EM, stands for electron microscopic structure of the single epithelial cell. So how would it look like? These are the cylindrical processes, countless processes. And here is the nucleus, and here are some organelles over here. These are two epithelial cells. This is so, dear students, this is the microvilli. These are the microvilli, and this one is a single epithelial cell, and this one is its nucleus, cytoplasm containing, and it is called as the brush border. Okay, so that is called as a brush border. So this one is the anatomy. Now, dear students, I am going to discuss the process of absorption which takes place over in this whole structure. तो हमारे पास टोटल 3 फूड जो पार्टिकल्स थे, न्यूट्रिएंट्स थे, और वो डाइजेस्ट हो चुके हैं। तो इनकी डाइजेशन कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे होगी? फर्स्ट ऑफ ऑल,
the amino acids or amino acids plus the glucose plus few, both come, glycerol and fatty acids. यहां पर फैटी एसिड और ग्लूकोज जो है वो फ्यू हैं, याद रखना है, फ्यू फैटी एसिड्स, but most of the glucose and amino acids, these are transported, they move to the blood capillaries, to the blood capillaries, ये जो सी blood capillaries हैं यहां पर, by diffusion, diffusion के जरिए भी जा सकते हैं, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्लियर? तो ये तो हमारा हो गया एक पोर्शन, दैट वाज द फर्स्ट पोर्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। नाउ रिमेनिंग द सेकेंड वन, दैट इज अ लार्ज नंबर ऑफ फैटी एसिड्स एंड लार्ज नंबर, यहां पर फ्यू की बात हुई थी, लार्ज नंबर ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। अब इनकी बारी है, ये कहाँ जाते हैं, किस तरह से होते हैं, ये थोड़ी सी समझने वाली चीज है डियर स्टूडेंट्स। सो बी कॉन्सेंट्रेट। सो लार्ज नंबर ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, they move into epithelial cell, epithelial cell में जाएंगे, where they join to form fat again। ठीक है, वहां पर फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, they will form the lipid, वो दोबारा से लिपिड बना देंगे। लेकिन ये काम कहां पर हो रहा है डियर स्टूडेंट्स, आपने ये चीज ध्यान में रखनी है, इन द एपिथेलियल सेल्स। क्लियर? अब यहां से फ्रॉम द एपिथेलियल सेल्स दे मूव इनटू द लैक्टिल, दे मूव इनटू लैक्टिल। लैक्टिल चूंकि लिम्फेटिक वेसल है, यहां पर क्या होगा, इन द लैक्टिल, what will happen, lipids plus proteins, जो कि इन lymphatic vessel के अंदर proteins होंगी, they will combine and form lipoproteins। clear? अब ये lipoproteins dear students, they will enter into the bloodstream, they will enter bloodstream through thoracic lymphatic duct। डियर स्टूडेंट्स, ये सबसे बड़ी lymphatic vessel है। ब्लड स्ट्रीम में कैसे पहुंच रही हैं, लाइपोप्रोटीन्स जो कि यहाँ पर बनी थी लैक्टिल, लैक्टिल से वो ब्लड जो लिम्फेटिक वेसल था वो मिलके अल्टीमेटली दे जॉइन टू फॉर्म द लार्ज लिम्फेटिक वेसल, जिसे कहते हैं थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट। और थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट फिर आगे चलकर हमारी जो सी यहाँ पर आम के पास होती है सब क्लेवियन वेन, उसके अंदर वो पोर कर देती है, यानी कि ये दैट एंटर्स इनटू आवर ब्लड स्ट्रीम। इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 14 के अंदर डिटेल से इसको समझाया जाएगा। क्लियर? तो वहाँ से जैसे ब्लड में आते हैं, देन the enzymes in the blood in blood hydrolyze them। किसको हाइड्रोलाइज करें, हाइड्रोलाइज lipoprotein into, again यानी को तोड़ दिया जाएगा किसमें, into lipids एंड प्रोटीन्स। प्रोटीन्स एज इट इज सर्कुलेट करती रहेंगी
और अब इन लिपिड्स की क्या फेट होने वाली है डियर स्टूडेंट्स? दीज लिपिड्स आइदर दे आर यूज्ड फॉर रेस्पायरेशन, या तो ये रेस्पायरेशन में इस्तेमाल हो जाएंगे, और दे गेट टू बी स्टोर्ड अंडर स्किन और द फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन्स। तो जहां जहां पर इनकी जरूरत है मेम्ब्रेन्स बनाने में, या कोई लाइक द स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं, ठीक है, उनको बनवाने के लिए ये इस्तेमाल हो जाएंगे। सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन द आइलियम। सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और स्टडी करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।